Hi, welcome to Nirav Gyan. In this video, we will learn about these two sounds, sound of H and sound of I. हमारी पहली वीडियोस में हम A से लेकर G तक साउंड ऑलरेडी कर चुके हैं. जिसने वो वीडियोस नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं. This is capital H and this is small h, and the sound of H is horse, horse, house, house, and we live with our family members in house. Horn, horn. Here you can see horn, hand. Hills, hills, hills means पहाड़ियाँ. आप देख सकते हैं पिक्चर में. Hat, hat. Hot dog, hot dog. Hot. Hotel, hotel. Horn. This is the picture of yak, and this yak has two big horn. Now move on the question answer. इन क्वेश्चन आंसर से बच्चे का जो मेमोरी है वो इंक्रीज होगा. जो भी बच्चे ने पहले स्लाइड में पढ़ा है उसका आंसर देने का ट्राई करेगा. क्वेश्चन नंबर 1. A thing which driver used to warn others on the road. ड्राइवर जो है वो रोड पर दूसरे लोगों को वार्न करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? यस, हॉर्न. नेक्स्ट, नेम ऑफ एनिमल विच यू कैन यूज फॉर कैरिंग थिंग्स एंड राइडिंग. हम अपना सामान उठाने के लिए, कैरिंग मीन्स उठाना, एंड राइडिंग और राइड करने के लिए हम कौन से एनिमल का यूज करते हैं? बट इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम साउंड. सो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करते हैं. बच्चा सोचेगा. डंकी भी बच्चे आंसर कर सकते हैं. आप वहां पर एक कंडीशन दे देंगे. इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम साउंड ऑफ एच. सो हॉर्स. You catch the ball with the help of your hands. Hands. Where do people go in summer season? Summer season में लोग कहाँ जाते हैं? Hill station. Hill station. What is the opposite of cold? Cold का opposite क्या होता है? Cold का उल्टा क्या होता है? Hot. Where do you live with your family? आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? House. What can we wear on the head? Head पर हम क्या पहनते हैं जो ह साउंड से शुरू होना चाहिए? Hat. अच्छा, इनिशियली अगर बच्चों का साउंड प्रॉपर नहीं होता है, नहीं हो पा रहा, बच्चा ह कह रहा है, तो ज्यादा फोर्स नहीं करना है आपको इनिशियली. जब बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे वो सीखेगा. So our next letter is I. This is capital I and this is small I, and the sound of I is I. I. So here's a picture of insects. I. Insects. I. Insects. I. Igloo. I. Igloo. And this is a house made up of eyes. I. Infant. I. इन्फेंट. इन्फेंट मीन्स स्मॉल बेबी. जो छोटा सा बेबी होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं. इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर. आप देख सकते हैं जो डॉग है वो कैनल के अंदर है, एंड कैनल इज द शेल्टर ऑफ डॉग. इग्वाना. इग्वाना. इंक. इंक. एंड वी यूज इंक टू रिफिल द पेन्स. Ice cream. Here sound is different. English language में कुछ sounds अलग होते हैं क्योंकि ये सब एक रूल्स के ऊपर बने होते हैं. जहां भी रूल्स होते हैं वहां पर एक्सेप्शंस जरूर होते हैं. अगेन, आयरन.
This is our controlling word. So sound is different in this word. Iron. Now move on the question. I am cold and you like to eat me on summer. Who am I? This is a kind of riddle. I am cold. मैं ठंडी हूँ या ठंडा हूँ. You like to eat me on summer. आप समर में मुझे खाना पसंद करते हैं. Who am I? And it should be started from I letter. Ice cream. Next, a small house that is built from block of hard snow. Snow से जो घर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? Igloo. What you use to remove wrinkles from clothes? Clothes पर हम wrinkles को हटाने के लिए उस क्या यूज करते हैं? Iron. Iron. What you use to refill the pen? पेन को रिफिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Yes, ink. Something that is used for playing music. हम something that is used for playing music. म्यूजिक बजाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आप किसकी मदद से म्यूजिक बजाते हैं? And it should be started from letter I. Instrument. Instrument. And here is a picture of guitar. Guitar is a musical instrument. If you like this video, kindly share and subscribe my channel. Thank you everyone.